Good afternoon. Hello, everyone. I am Dr. Nikhil Modi, Senior Consultant, Respiratory Critical Care and Sleep Medicine, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में फेसबुक के, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी बात बहुत कम करी जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। The term cystic fibrosis is for a disease of the lungs, not only lungs actually, but it can involve other organs. Cystic fibrosis is also known as mucoviscidosis. Mucoviscidosis is a common term which is used. Cystic fibrosis actually क्या है? It is actually बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। 1 in 1 million, मतलब 10 लाख लोगों में से एक में आफ्टर बर्थ होती है। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज, मतलब कि जीन से ये ट्रांसमिट होती है। तो अगर मदर से एक जीन आएगा, फादर से भी एक जीन आएगा, देन ओनली द चाइल्ड विल हैव दैट जीन ऑफ CFTR। एक रिसेप्टर होता है जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उसमें एक रिसेप्टर होता है CFTR। ये सॉल्ट की मूवमेंट सेल्स के अंदर से बाहर को रेगुलेट करता है। सो wherever this genes is getting involved, उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्ट की मूवमेंट है वो हैम्पर होती है। जो नॉर्मली हमारे अंदर सिक्रीशंस बनते हैं, नॉर्मली वो बहुत थिन होते हैं, और वो एक्चुअली में सिक्रीशंस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी के मैकेनिज्म को हेल्प करने के लिए होते हैं। बट जब ये डिफेक्ट हो जाता है, तो जैसे कि लंग्स के अंदर, लंग्स की विंड पाइप में, लंग्स में देयर इज मैकेनिज्म विच इज प्लेइंग दिस रोल। तो उसमें जब सिक्रीशंस जो होते हैं वो थिन होने की जगह, थिन होने से वो एक लेयर बना देते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ जो भी बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको क्लियर करने में हेल्प करती है। बट ड्यू टू द डिफेक्ट इन दिस जीन, जो सिक्रीशन होते हैं बहुत थिक हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम म्यूकोविसिडोसिस। विसिड मतलब थिक, थिक म्यूकस थिक होके लंग्स में अटकने लग जाता है। So it causes blockage, the secretion gets accumulated there, and then due to that there are repeated infections, lungs की wind pipe damage हो जाती है जिसको हम bronchiectasis कहते हैं, and due to repeated infections and damage to the lungs, patients then develop breathing issues. ये सिर्फ यहाँ के एरिया में, लंग्स में नहीं सिर्फ इन्वॉल्व होता, इसके अलावा पैंक्रियाज जो हमारा एक डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने का एक ऑर्गन होता है पेट के अंदर, पैंक्रियाज में भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। वहां पे भी सिक्रीशन थिक होके पैंक्रियाज में एक्यूमुलेट कर जाते हैं। ड्यू टू दैट इन पैंक्रियाज आल्सो द सिक्रीशन गेटिंग स्टक, डैमेज टू पैंक्रियाज अकर्स। सिक्रीशन से जो एंजाइम्स वहां रहते हैं वो पैंक्रियाटाइटिस कर देता है, मतलब उसका खुद का डैमेज करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द पैंक्रियाज, another name for this. So repeated pancreatic infection होने से पैंक्रियाटाइटिस होता है। पैंक्रियाटाइटिस से एक रिस्की एक बीमारी होती है जिससे वो खुद ही मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकती है। वो ना भी हो तो ग्रेजुअली पैंक्रियास पूरा डाई डाउन कर जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं रहती, पैंक्रियास में ही इंसुलिन भी सिक्रीट होता है, तो पेशेंट बिकम्स डायबिटिक ऑल्सो। पहले इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि मोस्टली सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो डिजीज के लोग होते थे, ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी वेरी लेस। पीपल यूज्ड टू डाई इन अर्ली एज, और मोस्टली एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स में ही ये बीमारी डेथ का कारण बन जाती थी। बट सिंस एडवांसमेंट हैज अकर्ड, लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट हैज अकर्ड, वी नो हाउ टू कंट्रोल दिस। उससे हमें पता लग जाता है कि अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसका ट्रीटमेंट बेटर हो गया, एंड नाउ पीपल आर सर्वाइविंग वेरी वेल इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स। इनफैक्ट अगर बहुत एडवांस हो जाए तो लंग ट्रांसप्लांट भी आजकल एक ऑप्शन बन गई है जो आगे चल के कंसिडर करी जा सकती है। बट इफ अ प्रॉपर केयर इज टेकन, देन cystic fibrosis can be controlled very very well.
For that, you just need to diagnose it at the right point of time. Now mostly cystic fibrosis के जो symptoms आते हैं वो टीन एज के बाद आने शुरू होते हैं. उससे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस के सिम्टम्स बहुत रेयर होते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. पर वन थिंग यू कैन सी, जब आप किड्स को बच्चे को अपने टच करते हैं, किस करते हैं, तो आप फील करेंगे उनके जो सिक्रीशंस बॉडी पे होते हैं बहुत सॉल्टी होते हैं, नमक उसमें ज्यादा होता है ड्यू टू दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो सॉल्टी सिक्रीशन एक वन ऑफ द एविडेंस होता है जो इनिशियल स्टेजेस में हम पता कर सकते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का डाउट तो नहीं है पेशेंट्स में. इनफैक्ट इन एडल्ट्स ड्यू टू दिस इनफर्टिलिटी, बिकॉज स्पर्म सिक्रीशन कैन आल्सो बी हैम्पर्ड ड्यू टू दीज थिक सिक्रीशंस, और इनफर्टिलिटी भी हम आजकल देखते हैं. पहले ये सब नहीं दिखता था क्योंकि बच्चे सर्वाइव ही नहीं करते थे इतनी एज तक, बट नाउ वी आर सीइंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स gradually. So to go by that, symptoms of cystic fibrosis can be divided into many things. Due to lung involvement, they have continuous cough all the time. They are coughing because these thick secretions are stucking. They have to clear it, and then for that, coughing is the main symptoms. Due to repeated infections, fever can occur. They will have repeated pneumonias. Pneumonias बहुत बार आ जाते हैं. इसके अलावा pneumonia and coughing, when the lungs start getting damaged, the breathing problem, the breathlessness sets in. So with the advancement of disease, the breathlessness is one which can occur. So these are the commonest symptoms. Even due to damage, sometimes blood and sputum can be seen. Thick greenish yellow sputum is one of the commonest finding in cystic fibrosis. So these are the common lung symptoms. Now due to pancreatitis, pancreas involvement, pain in abdomen, going to the back, recurrent episodes of vomiting and fever due to pancreatitis, these are other common. And due to the sperm involvement, infertility is the commonest symptom which we are seeing. So now when the pancreatitis is there, then you have to manage accordingly. For infertility, you can't do much. For the lungs, because mostly people die due to the lung involvement, for the lungs, treatment is advisable from the start. As soon as you realize a patient is suffering from cystic fibrosis, treatment needs to be started, continued, and this has to be a lifelong treatment. With this, the survival is now quite good and patients are surviving to a longer extent. For that, since the secretions which are there are thick, which are the main source of causing all these symptoms, so we have to thin out these secretions. For that, taking steam, some drugs like N-acetylcysteine and other agents which help in thinning out the secretions, which break the bonds in the secretion, makes it thin so that the person can easily clear out, can be started early. For cough, a proper cough control. Whenever patient develop infection, a proper infection control is a must. These things needs to be continued throughout the life. Once a lung damage has set in, which is causing breathing difficulty, nebulizers, inhalers start having a role, because bronchiectasis leads to obstruction in the airways. Secretion stucking can lead to obstruction, so inhalers and nebulizers can help to a large extent in these cases. So that's why if we say nebulizers are very useful in advanced cases of cystic fibrosis. Further, there can be physiotherapy exercises which can be done to help in drainage of these secretions. See, once the lung has got damaged, the secretions get the area. So there is a large pool which can be produced in which the secretion can keep on collecting. So like if my lower part of the lungs is involved, to drain that secretion, what we can say, to drain that secretion, what we can do is to do drainage, secretion drainage. Physiotherapy exercises can be very, very useful. So for doing that, if the lower lobes are involved, then we advise physiotherapy in lying down position,
the lower part of the limbs are placed up so that due to the gravity dependent drainage can be assessed. Vibrator device, just tapping the chest with all these things do help, and this can be useful uh, uh, and easy means of clearing out the secretions. All this support can be seen on the Apollo sites, and we usually put up some videos to help you in this. Even our physiotherapy department has been trained to manage these respiratory problems. There are certain devices which are there which can help us in taking care of this, and for that, if we say like there are some devices like flute, and there are some other acupella devices which transmit, once you blow in them, they transmit vibrations into the lungs. Due to this vibration, the secretions are moved, and with these moved up secretions, gradually what happens that these secretions can be cleared easily throughout. So with this physiotherapy, proper lung hygiene, steam, medicines to break the secretions, if you start these therapies early, patients with cystic fibrosis usually don't have any problem, and they can lead a normal life to a larger extent, which was not possible a few years back. So there have been advancement. Obviously, if the lung damage has become extensive, then the lung transplant is the last resort. But if you talk about lung transplant, it's not an easy modality. It is not available all over. The Apollo team in Chennai is doing the lung transplant very well, though it is available, but still the lungs for lung transplant are not an easy available option. So it's better to control the disease in the early stages, and we should be much ready to see when we develop symptoms so that we can take action early. जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे, जितना जल्दी करेंगे, तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने कहा पैंक्रियास का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पैंक्रियाटाइटिस अपने आप में अगर सीवियर हो जाए तो वो एक बहुत सीवियर बीमारी होती है जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो अर्ली कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग विच कैन बी डन फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज. तो अगर फैमिली में पहले किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस रहा है तो आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं उसके लिए, उसके जीन्स के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन एज वी से इज बेटर देन क्योर. अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन्स अवेलेबल हैं हमारे उसमें जेनेटिक मेकअप में, तो हम पहले से अगर हम स्टेप्स लें तो दैट विल हेल्प अस much more, and it will be better that we do these things. So it will help us in controlling the number of cystic fibrosis cases which are coming up. Gene therapy and other therapies की भी बात चल रही है, but it's too early to say how much gene therapy and all these are going to benefit. It is quite a long-term situation. We can only say in future whether the gene therapy will be available and going to help or not. For now, the treatment again remains maintaining lung hygiene, proper care of the lungs. One thing I forgot is vaccination. So for these, to prevent repeated lung infections, vaccine for influenza as well as pneumococcal vaccine as a part of adult vaccination program. Even in Apollo, we are doing vaccination for everyone who has lung diseases. For that, influenza vaccine is usually given yearly because the people who have lung problems are prone to more infection. So vaccination should be taken, and a pneumococcal vaccine which have to be given to everyone having lung problems every 5 yearly. Even if you don't have lung problems after 65 years of age, these vaccines are in any case recommended. So we are there to help you. If you do have cystic fibrosis, we can take care of that. This is what I can say about that. And with that, I would like to say cystic fibrosis, though still a disease which is very less commonly seen,
and mostly initially the mortality used to be high, but now with advancement in treatment, advancement in our knowledge, even the survival of these COVID patients can be COVID, I said COVID, cystic fibrosis patient has improved. Only thing is lung hygiene and physiotherapy at right time and regular consult with your doctor can help you in no bounds. बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. I can't see many questions in the box regarding cystic fibrosis. There is one question about COVID pneumonia though. So about one user is saying about her husband being diagnosed with COVID-19 and had a hospital stay for 25 days. Post-COVID inflammation, post-COVID complications are there seen in many patients, but usually who has normal oxygen levels, who return to normal early and don't have much changes in the lung, had mild disease, they usually don't show long-term complications much. Definitely who had a moderate to severe disease, required oxygen, some amount of lung damage can be seen in them. But now if a proper treatment, a proper follow-up is maintained, so future side effects can definitely be prevented. This is all I can say, and mostly complications are reversible except for the fibrosis which is seen in post-COVID patient. So if you consult a doctor, we have ourselves developed post-COVID recover clinics in which we have a pulmonologist, we have a physiotherapist, we have a dietitian, we have, because psychological counseling is important because mental effects due to COVID are also seen, and in our recovery clinics we are providing this comprehensive approach which can help in controlling all these side effects and you can lead a normal life post-COVID. Thanks a lot. Thanks for joining the session.